Okay, last class we installed that Visual Studio Code. Okay, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. And this is the page which you get when you first start your Visual Studio Code. Here we need to open folder. Okay, because किसी folder के अंदर ही काम करेंगे ना हम. So open folder, and see, I'm creating a dedicated folder for that. So now we will be having classes for Python. Okay, the videos will be regarding Python. तो Python की folder बना देती हूँ. This is for Python. Okay, and I'm selecting this folder and select folder. Okay, see, it would take a few seconds, and see, you are in your folder. See, these shortcuts you can learn, or these are already available. Okay, yes, I trust the authors. Okay, now in this folder we will be creating new file, and we need a Python. So okay, see, for running Python in Visual Studio Code we need some extensions here. Okay, because Visual Studio Code is a normal editor until and unless we install some extensions there. See, so you have extensions here. If I click on this, I'll be searching here Python. See, I'll show you these two. I have already installed this one and this one. See, you need this one. Okay, Python IntelliSense, this one. Okay, I'll be adding this also, this video also, to add extension step by step. Okay, now after being adding that, I'm just today I'm just टीचिंग यू कि विजुअल स्टूडियो में काम कैसे करते हैं. नॉर्मल सी एक न्यू फाइल बनाई, पाइथन नाम की फ़ाइल हमने बनाई. ठीक है, सॉरी, पाइथन टाइप की फ़ाइल बनाई हमने. नाउ आई विल बी टाइपिंग अ सिंपल प्रिंट हेलो. है ना, किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वी राइट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. सो आई एम राइटिंग दिस सिंपली. है ना, simply there is a hello world. Okay, inside these brackets and there's a print. Unlike other languages, we don't need anything, any class or anything, any function, any main method, nothing. Okay, Python is an interpreted language. Okay, so I am clicking a run Python file. Okay, I need to save this. Okay, तो इसके नाम में hello, and the extension would be .py. Even if you don't give py, you have save as type Python. Okay, so I'll skip that and save. See, it comes as hello.py. Right now, I'll be running this and wait for the output. See, I translate this. Okay, it came 2 times. दो बार रन हो गई. Hello world. Okay, similarly if I write print how are you all. Okay, what do you expect this? ओके, हेलो, हाउ यू ऑल. ओके, तो ये बेसिक फंक्शनिंग है. हम विजुअल स्टूडियो कोड में काम कैसे करते हैं. ठीक है, यू ऑल्सो हैव फाइल, न्यू फाइल जो आप करते हैं ना, यहाँ से भी कर सकते हैं. यहीं पर आपको इसी फोल्डर में और भी न्यू फाइल्स बनानी है तो यू कैन हैव दिस. यू कैन मेक न्यू फोल्डर्स, यू कैन ओपन न्यू फोल्डर्स. ओके, एडिट एंड ऑल दीज थिंग्स आप जैसे काम करेंगे वैसे ही आप सीखेंगे. Okay, and that's all for this video. Again, now I'll be starting Python tutorial from the next videos. Okay, keep following. Do like and subscribe and share if you like these videos. Okay, thank you.